हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि कुशवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम नमस्ते सरस्वती देवी Hare Krishna. Today is very auspicious day. Today is Purnima, and today is the day when one of the deities in Vrindavan, Shri Radharaman Dev appears. Not only Lord Narsimha appears from Shila, but Shri Radharaman Dev also appears from Shila. Different Shila. This is Shaligram Shila. But because out of overwhelming love for his devotee, Srila Gopal Bhatt Goswami. And today who else appears? You don't observe calendar नहीं देखते आप लोग? वैष्णव कैलेंडर रोज देखना चाहिए. माधवेंद्रपुरी को अपीयरेंस. हाँ, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का आज आविर्भाव है. यस, टुडे दी अपीयरेंस. क्या हुआ, सोनिका ज्वाइन नहीं कर रही? कई दिनों से बात किया आपने उससे, रम्या? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा. एक्चुअली संडे को नीट का एग्जाम है तो उनको काफी बार प्रेशर है प्रभु जी. तो वो एग्जाम दे रही है नीट का? नहीं प्रभु जी, उनको वहाँ पे पीडब्ल्यू में उनको केमिस्ट्री का फैकल्टी मेंबर में वहाँ पे टीम में रखा गया है, तो उनको थोड़ा काम में लोड पड़ रहा है. वहाँ पे नीट के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं ना प्रभु जी, इसलिए. अच्छा, ओके. और आज आज किसका आविर्भाव है? राधा रमन देव का आविर्भाव है, माधवेंद्रपुरी का आविर्भाव है. और जहां तिलक लगाते हो ना, वहां सब लोग अपना वैष्णव कैलेंडर लगा लो, ताकि आपको पता रहे. और क्या है? बोलो रम्या. हंसने की नहीं, रोने की बात है. तो क्या हम फॉलो कर रहे हैं? तो कैसे डिवोटी हैं? हरे हमें कृष्ण. हाँ बोलो. श्रीनिवास आचार्य के अपीयरेंस. हाँ, वेरी गुड. आज श्रीनिवास आचार्य का भी आविर्भाव है. और पुरुषोत्तम, तुमने एक सेवा ली थी, भूल भाल गए? हाँ, ये छोटी सी सेवा थी कि रोज रिमाइंडर देना, एक एक दिन पहले वैष्णव कैलेंडर का. कुछ दिन किया, उसके बाद भूल भाल गए. आसान नहीं है. सेल्फलेस सर्विस करना बहुत मुश्किल है. कोई एक सेल्फलेस सर्विस हम पूरे जीवन भर करें, कंडीशन सोल के लिए बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है. हम हमेशा एक्सपोज हो जाते हैं. और क्या है, बताइए. नहीं पता. प्रदीप, तुम्हें तो पता होने का सवाल ही नहीं है. There is also one very beautiful utsav, Salila Vihar, boat ride. Krishna फूल डोला सलिल विहार. मंदिर में बताया होगा ना? क्यों भाई कुबेर, सवेरे हुआ या नहीं हुआ उसके ऊपर कुछ चर्चा?
हरे कृष्ण प्रभु जी, माधवेंद्रपुरी के बारे में ज्यादा चर्चा हो रही है। सुन लिया था मैंने, हैग्री प्रभु ने क्लास दिया था, मैं सुन रहा था। जी। वो तो खाली एक ही बोले और तो कुछ बोले ही नहीं। हाँ, दो के पर आज बाकी कृष्ण बोल का। दिए। हाँ, बाकी बस ऐसे बता दिए थे, बस डिटेल्स नहीं बोले। डिटेल क्या, पता ही नहीं है तुम्हें। आज कृष्ण का सलिल विहार है। कृष्ण फूल डोला सलिल विहार। और आज चैतन्य महाप्रभु के एक और पार्षद हैं श्री परमेश्वरी दास ठाकुर, उनका भी तिरुभाव है। तो इतने सारे उत्सव हैं। लेकिन मैं विशेष रूप से बोलना चाहूंगा श्री राधा रमन देव का आविर्भाव बहुत विशेष है। कल मैं मेडिटेट कर रहा था इसके ऊपर कि नरसिम्हदेव भगवान अपने भक्तों का जो भी वर्ड्स था उसको ही wanted टू prove all the statements of all his devotees true. So he came in the form of Lord Narsimha. How many devotees or how many personalities statement he made true? बोलो। बोलो फटाफट बोलते जाओ। अरे नरसिंह का जो रूप आया उस रूप से उन्होंने कितने अपने भक्तों का जो घोषणा थी उसको सत्य किया। बोलिए। हाँ बोलो रम्या। Prabhuji, I remember two, Prahlad Maharaj and Brahmaji. एंड Brahmaji. कैसे? यू हैव टू आंसर ऑल्सो ना, हाउ? Yes. Brahmaji gave benediction to, Hiranyakasipu that there are several conditions that he will not be die in so many ways. So Narsimhadev fulfilled all the condition and he killed Hiranyakasipu. In that way, he also they, यस, ब्रह्मा जी ने कहा था आई कैन नॉट मेक यू इमॉर्टल। अब मरना तो तुम्हें पड़ेगा। तो जितने उसने वर मांग सकता था सारे वर मांग लिए। लेकिन उसके बाद भी उन सारे वरों को हाँ डिफेंड करते हुए भगवान ने उसको मार दिया। तो ब्रह्मा जी का जो स्टेटमेंट था सत्य कर दिया। ठीक है, प्रहलाद महाराज का क्या स्टेटमेंट था? Prahlad Maharaj told that everywhere Lord is omnipresent, and when Hiranyakasipu asked, is your Lord is present also in this pillar? So खंबा। Prahlad यस, Maharaj वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आपने दो बता दिए। और बाकी किस किस का किया? बोलो, बोलो पुरुषोत्तम। क्या इतने सालों से हाँ ये नरसिंह चतुर्दशी हम बनाते हैं, खाली एक्सटर्नल बना रहे हैं या कुछ इंटरनल भी कर रहे हैं? प्रभु हिरण्यकशिपु का भी एक्चुअली किया, क्योंकि उसको लगता था कि वो मरेगा नहीं, बट नरसिम्हा भगवान ने इसको। तो उसमें कैसे हो? उसमें कैसे हो? उसको लगता था मरेगा नहीं तो भगवान ने उसके स्टेटमेंट को सत्य कैसे कर दिया? वो तो मार दिया उसको, उसके स्टेटमेंट को तो गलत कर दिया। थोड़ा विवेक के साथ बोलो, ध्यान पूर्वक। अभी मैंने बताया ना कैसे स्टेटमेंट दोनों सही किए। हिरण्यकश्यप का भी स्टेटमेंट को भगवान ने रखा, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं। कैसे वो बताना पड़ेगा आपने। अगर आपने पढ़ा है और सुना है सही से तभी बता पाओगे, ऐसे तुक्का मार के कुछ नहीं चलेगा। बोलो भाई, आप दोनों बोल चुके हो, आप बोल चुकी हो। रम्या आप चुपचाप बैठो सुनो। आपको दो पता था, दो बता दिया, अब बाकी पता करो। बोलो भाई मनोरम। इतना गहरा सोच रहे हैं। Hare Krishna Prabhuji, one thing actually I remembered that
this Hiranyakashipu, Hiranyaksh as Jai Vijay. So Lord promises that they will be killed, and after that they will go to Vaikuntha planets, Prabhuji. Three times, so they will take birth, and but they will get Vaikuntha. So that happened actually. But by coming as Narsim Dev and killing, how the statement of Hiranyakashipu became true? That was not in the life of Hiranyakashipu, that was in the life of Jai Vijay, na? Okay, one point I can accept yours is that he made the promise to Jai Vijay fulfilled by coming and killing. But how he made the promise of Hiranyakashipu or words of Hiranyakashipu become true? और who else? There are many more. लंबी लिस्ट है. बोलो भाई, भाग्यश्री और तुम तो वहां रोज मंदिर में रोज क्लास सुन रहे हो 3 दिन से. क्या सुन रहे हो? बताओ. चुपचाप बैठे रहते हो, कुछ नहीं बोलते हो. धन्यवाद. प्रभु जी, हिरण्यकशिपु को ये लग रहा था कि जो भक्त है उसको मतलब भगवान बचा नहीं सकते, तो वो एक मतलब ठान लिया था कि प्रहलाद जी को कोई नहीं बचा सकता। तो वहां पे बोलते हैं कि भगवान भी और प्रहलाद महाराज भी, तो डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा नेवर क्वेस्ट, तुम क्या जो है बोल कि रहे हो? कौन थे या एक मिनट एक मिनट प्रतिजान। एक मिनट एक मिनट, रुको 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 रुको, पहले समझो क्या प्रश्न पूछ रहा हूं मैं. आप कुछ और ही बोल रही हो, आप किसी और ट्रैक पे जा रही है. मैंने ये पूछा कि भगवान नरसिंह रूप में अवतरित होके किन किन लोगों का जो प्रॉमिस था उसको फुलफिल किया. आप कह रही हो कि वो सोच था कि वो मार देगा, तो असत्य हो गया ना. वो मार तो नहीं पाया ना प्रहलाद को. वो कहाँ मार पाया प्रहलाद को? तो उसका स्टेटमेंट कहाँ सत्य हुआ? समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया. मैं ये पूछ रहा हूँ किन किन का स्टेटमेंट भगवान ने सच स्थापित कर दिया. आपने वो श्लोक भी सुन लिया, मोहन प्रभु ने उसके ऊपर क्लास भी ले लिया. सत्यम विधातुम 7 8 17. फिर तो क्या सुना, क्या समझ में आया? एक एक घंटा 1.5 घंटा बैठ के सुन भी लिया, तो क्या समझ में आया? वही पूछ रहा हूँ, उसका बेसिक प्रश्न. बोलो रविंदर. और किस किस का स्टेटमेंट सत्य किया? क्या तुम सब लोगों ने सुना है ना? तो क्या सुना है? एक आपको बताना है, एक प्रियंका को बताना है. अभी प्रहलाद महाराज का स्टेटमेंट सत्य हुआ नहीं है. प्रहलाद महाराज का तो स्टेटमेंट सत्य हो गया, वो तो बता दिया रम्या ने. हिरण्यकशिपु का कैसे सत्य हुआ? और किन किन का सत्य किया? बोलो दयाशील, तुम भी कुछ नहीं बोले हो. इतने सालों से सुन रहे हो, क्या लीला समझ में आ रही है? बोलो, इसी में टाइम वेस्ट खत्म हो जाएगा. रविंदर, इतनी देर से बंद करके बैठे हो, अपना खोलो और बताओ. तो जी हमें वही दो पता था तो जी। कुछ नहीं क्या पता. बताएं? आप लोग पढ़ते नहीं है? क्यों नहीं पढ़ा? कल आप लोगों ने इतना सारा टाइम था आपके पास, आपको पूरा पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवतम. कल मैंने 5 चैप्टर्स भागवतम के पढ़े. पढ़ते नहीं है आप लोग? आपको बस केवल घुट्टी बना के मैं दे दूं और बस आप लोग वो पीते भी नहीं है, आधी पीते हैं आधी उल्टी कर देते हैं. खुद कुछ नहीं करना चाहते. बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं छूटोगे. प्रियंका, और किस किसका स्टेटमेंट सत्य किया? दो का ही किया? वाह. हाँ, आपके कहने से दो का ही किया है.
औरों का भी किया है। यह आपने आपने सुना नहीं ठीक से या पढ़ा नहीं। और किसी को भगवान ने प्रॉमिस किया था, या जिन्होंने भगवान से वर मांगा था, भगवान ने उन्हें तथास्तु किया, फुलफिल किया इस नरसिंह अवतार से। उसी से कनेक्टेड था। राधा रमन जी का मैं बोल ही नहीं पाऊंगा यार, बोलने का मौका ही नहीं दोगे तुम लोग, ये सब टाइम वेस्ट कर रहे हो। बोलो प्रियंका। प्रभु जी एक मदर अर्थ का था कि जो उत्पात मचा रहे थे। नहीं, इसमें नहीं आएगा, वो तुक्का नहीं लड़ेगा भैया, बता दिया मैं, तुक्का चलेगा नहीं। अगर आपने पढ़ा होगा 7वां स्कंद, और पहले से लेकर के 10वां अध्याय, 10 अध्याय में है, तो आप उसमें उसी से बताना पड़ेगा, इधर उधर से कुछ नहीं चलेगा, फालतू का तुक्का नहीं चलेगा। मैंने तुमको पहले ही वार्न किया, तुक्का नहीं चलेगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस में तुक्का नहीं चलता है, वो कभी नहीं चलेगा। दयाशील, तुम कहाँ पीछे मुंह छुपा रहे हो, इधर आओ। फिर अभी भी नहीं आया। बताओ बताओ, जल्दी बताओ आप लोग। प्रभु जी कोई बेल बजा रहे हैं इसलिए। अच्छा, बताइए, हद हो गई, आप लोग कुछ पता ही नहीं है। ये 3 दिन से मंदिर में बैठ के सुन रहे हैं रोज, तो भी कुछ नहीं पता है। हिरण्यकशिपु का क्या स्टेटमेंट था जो भगवान ने सत्य कर दिया? जब हिरण्यकशिपु ने बुलाया, इतनी बार उसके ऊपर क्लास हो चुकी है, अपने पुत्र प्रहलाद को, और उससे पूछा कि तुमने क्या सीखा, और पहली बार उसने क्या बोला, ये बताओ। पहली बार क्या बोले प्रहलाद महाराज, व्हाट डिड ही स्पीक? हाँ बोलिए दर्शील। प्रभु जी श्रवणम कीर्तनम विष्णु। नहीं, गलत है। फर्स्ट टाइम नहीं बोला है, सेकंड टाइम बोला। वो सेकंड टाइम बोला है। हाँ बोलिए, बोलिए रम्या। प्रभु जी, प्रहलाद महाराज said that the source of energy that you have and that I have is same. दैट इज, व्हाट डिड ही आस्क, व्हाट डिड ही आस्क ना, व्हाट हैव यू लर्न, ये थोड़ी बोला। क्या बोला? तत्साधु बनने असर्वीर। हाँ मायना। ग्रह अंधकूपम वनोगतो वा। ग्रह अंधकूपम वनोगतम वा। अगली बार जब उसने पूछा तो श्रवणम कीर्तनम बताया, तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि तू सुधेगा नहीं, यू विल नॉट करेक्ट योर सेल्फ, यू विल नॉट चेंज, यू विल बिकम द कॉज ऑफ माई डेथ। हिरण्यकशिपु के स्टेटमेंट को भगवान ने सिद्ध कर दिया, प्रहलाद बिकेम द कॉज ऑफ हिरण्यकशिपु's डेथ। सो ही फुलफिल्ड द प्रॉमिस ऑफ हिरण्यकशिपु, दैट प्रहलाद बिकेम द कॉज ऑफ हिज डेथ। लिखा है सब भागवतम में, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। और और किस किस का फुलफिल किया? बोलो रियान जी, तुम बताओ, ये सब तो क्या बोलूं मैं, आप बताओ। अमोहा सुन रही है? नहीं सुन रही? हरे कृष्णा, अमोहा ठीक है? हेल्थ ठीक हो गया? बोलो। हरे कृष्णा। और भगवान ने किस किस का प्रॉमिस फुलफिल किया? इंद्र का। जब इंद्र अपने सभी देवताओं के साथ when he approached लॉर्ड विष्णु, भगवान ने कहा मैं अभी नहीं मारूंगा उसको, मैं उसको कब मारूंगा, जब वो मेरे भक्त प्रहलाद को टॉर्चर करेगा, तो उसको हैरेस करेगा, तो मैं उसको मार दूंगा। और
नारद मुनि का। कैसे? नारद मुनि का कैसे फुलफिल किया? मैं तुमसे ये क्लास में ऐसी चर्चा तो करता नहीं, कथा बता तो मैं खाली सुना के एक हाँ लप्पा तो मुंह में दूंगा नहीं। मैं हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ध्यान पूर्वक सुने और उसका जो कंक्लूजन है वो निकालें। ये नहीं खाली जैसे हाँ सो कॉल्ड रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस है। ज्यादातर लोग हियरिंग हियरिंग रीडिंग कहीं नहीं खड़े होते क्योंकि प्रयास ही नहीं करते, चेतना लगती ही नहीं है, तो कुछ पता ही नहीं होता है। खाली ऊपर ऊपर से पता है, अंदर से कुछ पता ही नहीं क्या है। बोलो रे कुबेर, इतने दिनों से तुम सुन रहे हो, रोज क्लास में जाते हो, क्या समझ में आया? नारद मुनि का कैसे 3 दिन से चल रही है ना नरसिंह कथा, वहां पे तीनों दिन सुन रहे हो, जी क्या समझ में आया? नारद मुनि का कैसे प्रॉमिस फुलफिल किया? बोलो रे अंशी, आप बताओ नारद मुनि का क्या प्रॉमिस था? नारद मुनि ने किसको प्रॉमिस किया था? अनम्यूट करके अनम्यूट करो, रविंद्र अनम्यूट करो। अरे पूरा समय खत्म हो जाएगा, मैं राधारमन देव का अपीयरेंस बोलना चाहता हूँ। बोलिए, बोलो बोलो। आवाज तो आ ही नहीं रही यहाँ तक। बोला या नहीं बोला अभी? When Hiranyakashipu went to, forest to perform severe austerity, at that time what the demigods did? They captured his wife Kayadu and they were taking her away forcibly. Why? Because they said that we want to kill the child who is inside his womb, inside her womb. And who appeared? Narad Muni appeared. And Narad Muni said that you cannot kill the child. Why? Because this child is a very, very advanced devotee. And this child will be protected by the Supreme Lord Himself. So, Narsimha fulfilled the promise of Narad Muni. And Narad Muni told Kayadu that you should not fear because your child is a very, very advanced devotee. So, both he fulfilled the promise of Narad Muni. Prahlad Maharaj became the very advanced devotee. Prahlad Maharaj is one of the most advanced devotees. Yesterday I gave a class on this. Prabhupada is writing among the 12 Mahajan, he is the most advanced. And who are the 12 Mahajans? Swambhu, Naradha, Shambhu, Kumaro, Kapilo, Muno. Prahlado, Janako, Bhishma, Balir, Vaya, Saki, Vayam. So amongst these 12 is the most foremost devotee of Lord Krishna or Lord Vishnu. So in this way, not only the Lord promised, this is what I was wanting to say, the Lord fulfills the aspiration of all his devotees who are having this pure desire to serve him. The Lord reciprocates. Not only he reciprocated with Prahlad Maharaj, he also reciprocated fully with Srila Gopal Bhatt Goswami. But as we see in the life of Prahlad Maharaj, I was hearing one lecture of Rukmini Krishna Prabhu, he gave a very, very subtle point. Let's see, Prahlad Maharaj, he served Narad Muni. He heard from Narad Muni. And he received the blessings of Narad Muni.
And Hiranyakashipu, what he did? As Jai Vijay in Vaikunth, he offended the four Kumaras. So the offense that he made to four Kumaras, he had to come as Hiranyakashipu. And he was killed by the Lord. Whereas Prahlad Maharaj, he served Narad Muni and the Lord came to protect him. Prahlad. Lad means one who is always in bliss. So he is already in bliss. He was always blissful. He never complained to his father, why you are trying to kill me? Huh? You are my father? What kind of father you are? Huh? It has ever happened that the father is trying to kill the child? He never complained because always blissful. And Prabhupada is saying in one of the purports that Narsimha appeared to make Prahlad Maharaj Prasanna Atma. That is, Lad became even more condensed. Prahlad Ahlad Lahine. He million times increased the bliss of Prahlad Maharaj. So similarly, we see the life of Srila Gopal Bhatt Goswami. In his childhood, he had the association of Lord Chaitanya Mahaprabhu. And how much association he had of Lord Chaitanya Mahaprabhu and when and where he had? Pradeep, at least I expect you to answer this correctly. You came to Srirangam with us? Yes, so So I took you to the place. This is very poor. Don't know about six Goswami's basic activities. Who will answer? Purushottam, you answer. छह गोस्वामी में अभी क्लियर ही नहीं कौन सा गोस्वामी क्या है. इतने साल हो गए, 10, 15, 20 साल हो गए. छह गोस्वामी के बारे में भी क्लियरिटी नहीं है कि रूप सोनाथ गोस्वामी कौन है, सनातन गोस्वामी कौन है, रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है, रघुनाथ भट्ट कौन है, जीव कौन है और गोपाल भट्ट कौन है. बोलो बोलो जल्दी बोलो. ब्रज में रहते हो भैया? हाँ. रेयांशी विल आंसर. रेयांशी आप बताओ श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में. अनम्यूट करके ना. वॉइस नहीं आ रहा है. Prabhuji in Srirangam. यस, इन श्रीरंगम. And what was the duration? And what was his age? 4 years. And for how long? Yes, he was around 4 to 6 years. 6 years, around 6 years. So he was there for 4 months. And Lord Chaitanya, who is Lord Chaitanya? Shri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Anya. So the Braj Ras and the Braj Prem of Lord Chaitanya was injected into the heart of Srila Gopal Bhatt Goswami at such an early age. And Gopal Bhatt Goswami wanted to come along with Lord Chaitanya, but Lord Chaitanya did not allow. What Lord Chaitanya said? That you stay and serve your parents. And when they leave, don't come to me. Where did he send? Where did he send Gopal Bhatt Goswami? Hare Krishna Prabhuji. Yes, Vrindavan. Vrindavan. Under the shelter of Srila Rup Goswami and Sanatan Goswami.
What a privilege. Hmm. He was trained first by the Lord himself in his childhood, and then later in his youth, he was trained by Srila Rup Goswami and Sanatan Goswami. And with that special love, the condensed love that he had in the heart for Lord Chaitanya, he was serving his Shaligram Silas. And how he got this Shaligram Silas? When Lord Chaitanya Mahaprabhu disappeared, when Chaitanya Mahaprabhu uh, wound up his active pastime in this material world and returned back, so the pain of separation was so severe in the heart of Srila Gopal Bhatt Goswami that he didn't want to live. He could not sustain his life. And Lord Chaitanya appeared to him and said that you go towards Himalayas and you will find me. So Gopal Bhatt Goswami from Vrindavan through Saharanpur and Haridwar, he goes where? Where does Srila Gopal Bhatt Goswami goes? Manoram? I would have given at least 4 to 5 lectures on Srila Gopal Bhatt Goswami in various temples in last 10 years, or even more. Oh, ये बताएंगे गौरांगी गौरांगी को पता है? अच्छा, बताइए। अनम्यूट करो। नेपाल? हाँ, तो मम्मी ने बताया है। नेपाल में रिवर का नाम बता दो तो मान जाए। बताना नहीं। रिवर का नाम ये बताओ। टीवी में देखी है प्रभु जी स्टोरी गोपाल भट्ट अच्छा, टीवी में? गोस्वामी के बारे में। जी। रिवर का नाम बता दो। रिवर किस रिवर में मिला? पता है कहाँ से शालिग्राम मिला था उनको, कौन सी नदी से? बस गई रेयांशी, कहाँ गई? कौन से रिवर में मिले शालिग्राम शिला? गंडकी रिवर। यस, गंडकी रिवर। गंडकी रिवर। और क्या हो रहा था? वो जैसे ही अपने कमंडलों में पानी डाल रहे थे, शिला उसके उनके कमंडलों में आ जा रही थी। और वो कमंडलू से शिला बाहर निकाल रहे थे। एवरी टाइम ही वॉज ट्राइंग टू ब्रिंग द शिलाज आउट फ्रॉम हिज वाटर पॉट, द शिलाज वर जंपिंग बैक. Then it struck to him, oh, ho, ho. Lord Chaitanya said that you will find me. So Lord Chaitanya is appearing in the form of these Shaligram Shilas. So he accepted it, came back in Vrindavan and started to worship with his life and soul. Yesterday I saw the Abhishek here. We have Narsimha Dev DT here, very small DT. And what a impeccable way. I'm so convinced the quality of devotion here in devotees is far, far advanced than we can ever be, especially the Matajis. This is a Muslim country, and the way impeccably they do Abhishek was so very pure, although it was not as high or with so many juices and other ingredients like we have in our temple, but it was very meticulously done. Almost all devotees performed Abhishek. No dhakka mukki, nothing. So Sila Gopal Bhatt Goswami, he brought those Shaligram Shilas. There were 12 Shaligram Shilas. Just imagine 12 Shaligram Shilas coming in one water pot. And he carried the Shaligram Shila and he was serving. So when festivals would come, Chandan Yatra came few days back. So he offered Chandan to his deities. Yeah, Shaligram Shila. And on the night of Narsimha Chaturdashi, Srila Gopal Bhatt Goswami
is crying, he's calling out. He's saying that because of love of Srila Rupa Goswami, you have manifested in the form of Govindev. Out of love and to accept service of Srila Sanatana Goswami, you have manifested in the form of Madan Mohan. And so many other deities you have manifested. But my heart is like a stone, which has no love and no service for you. That is why you have come to me in the form of a stone, Shaligram, where I cannot give you personal Sangar service like other Goswamis are doing to their deities. An entire night of Narsimha Chaturdashi, he was crying and cursing himself for his lack of devotion. But Gopal Bhatt Goswami is very special. The Lord wanted to show his devotion to the world, like Lord wanted to show the devotion of Prahlad to the entire world. So he manifested from the pillar. And on today's date, after Narsimha Chaturdashi was over, entire night, Srila Gopal Bhatt Goswami was lamenting. And today morning, he goes to take his snana at Yamuna Snan. And when he come back, he sees his Shaligram Shila has completely been transformed. From the Shila, the beautiful form, the three bending form of Srila Radharaman Dev has appeared. Very, very special deity, Shri Radharaman Dev. Because the lotus feet of Srila Radharaman Dev is exactly like the feet of Sri Madan Mohan. And the portion of torso समझते हैं? कमर के ऊपर से लेकर के गले तक. And his beautiful hands manifest exactly Gopinath. And his beautiful face is exactly the same of Radha Govind Dev. So all these deities, they left Jaipur. They left Vrindavan to Jaipur, for Jaipur. But Radharaman never left Vrindavan. And it is said that if you take the darshan of Sri Radharaman Dev, it is as good as taking the darshan of these three devs, Sri Govinda, Gopinath, Madan Mohan. So out of intense love of Srila Gopal Bhatt Goswami, Pranadhan Sri Radha Raman Ji Lal, Jai 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 Sri Bhatt Gopal. Pranadhan, Prana means the life and Dhana means the wealth. The entire life and wealth of Srila Gopal Bhatt Goswami is Sri Radharaman Dev. And to show the entire world the intimacy and sweetness and exalted position of service that Sri Gopal Bhatt Goswami rendered, Radharaman Dev appeared in this transcendental form. And where he appeared? What is that place where he appeared? Where is the Radharaman temple? It is the place, it is just near to Vamsivata, on the bank of Yamuna. It is so when Krishna is performing Rasa Leela with the gopis. So the gopis are thinking that they are the most fortunate souls in the entire creation. And the Supreme Personality of Godhead is Himself dancing along with them. So what a great fortune. Who can have a greater fortune than this? As soon as the gopis had this desire or this thought in their heart, Krishna disappeared. And Krishna disappeared with Srimati Radharani. And Radharani was telling Krishna that she has become very exhausted after dancing. So she asked Krishna to hold her and take her in a place of seclusion.
Krishna does that, but in a while Krishna also disappears from the vision of Srimati Radharani. And Srimati Radharani is all alone and she is feeling intense separation and she is searching for Krishna. A very beautiful verse in Bhagavatam. It just talks about Radharaman. Once, many, many years back, I was given one lecture to speak on Saptales, the Saptadevales. In Vrindavan, we have the 7 Goswami temples. This was Faridabad temple were doing a special series on the Goswamis. So Gopishpur Prabhu asked me. So what I did is, I did my research on Radharaman Dev and I interviewed the Goswami of Radharaman Dev 2 times by telephone. It was COVID time. And then that Goswami, he shared this verse, that Radharaman's appearance is there in Srimad Bhagavatam. I said, how? Then he showed me this verse. I'll share with you. Can you see the verse? बोलो हाँ ना तो बोलो. Yes, Prabhuji, it is visible. So why is Ramana? This name of Radharaman was given actually by Srila Rupa Goswami. When the Goswamis came to know that Radharaman Dev the deity has appeared from Shaligram Shila of Gopal's, this was called Damodar Shila. So Rupa Goswami, Sanatana Goswami immediately came. Everyone in Vrindavan came to the place to see the manifested deity. So when Srimati Radharani is all alone in that area and she is searching for Krishna, how she is searching, she is calling for Krishna. And how she is calling? He Natha Raman Preshtha Vasi Kwasi Mahabhujha Dasyaste Kripanaya Me Sakhe Darshaya Sanidhim. So she is calling out, He Natha, O my master, O my lord, you are Raman Preshta. Raman means one who gives pleasure. So Krishna is Radharaman. Because he gives pleasure to Srimati Radharani, so he is Radharaman. And Srimati Radharani's company gives pleasure to Krishna. So Krishna enjoys in the company of Srimati Radharani, so he is also called Radharaman. Both ways. So she is calling. Who is calling? Srimati Radharani is calling. So her name is not mentioned because she is calling. He Natha Raman Preshta. Who is Raman? Radha's Raman. And Preshta is dear most beloved. Kwasi Kwasi Mahabhuja. Where are you, my dear? Where are you? O mighty armed Mahabhuja. Why you have abandoned me? Why you have rejected me? Why? Dasyaste kripanayame. I am your maid servant. I am a soul who is surrendered to you. And I am completely wretched in a very abominable state because you have rejected me or you have left me. Dasyaste kripanayame. My position has become very, very abominable. So kindly sakhe darshaya sanidhim. So please manifest yourself. Please give me your darshan. Please show me your presence. So where Srimati Radharani was searching, that area in near to Yamuna, ahead of Vamsivad, that is exactly the place where Radharaman Dev appears. So who knows this Leela? Is Srila Rupa Goswami? She is Rup Manjari? She is making this Leela
being performed. She is assisting Srimati Radharani. So that is how Srila Rupa Goswami names this deity as Radharaman. And Radharaman's appearance is there. Very, very extraordinary deities. The deity which has nails. The deity which has teeth. The nails still grows. The nails of Sri Radharamanji is still growing. The Goswamis have to cut it. This deity is life. And when deity is very pleased, you can see his teeth. I have seen few times. Normally you don't see his teeth. But when he is actually pleased, when you take darshan, you can see his teeth. And this is the only deity who has a dining hall. What do we do normally? How to offer bhog? That we prepare in our deity kitchen. We prepare a thali and take it in front of the deities. And we ring bell and offer mantra and the deity eats. And we take it back. It is not the same with Radharamanji. Radharamanji has a dining hall. And the bhoga is placed on the dining hall, and Radharamanji goes in the dining hall and he accepts and enjoys the bhoga. So there is no fixed time. Many times, if you go to Radharaman, you will not get darshan. Because there is no fixed time of when Radharaman will open and when he will close. Because he is like in a Vatsalya bhav. Mother Yashoda is feeding. So the child to feed, for mothers, they have to take a very big exercise. It is not that बच्चे के सामने 1 साल के बच्चे के सामने 2 साल के बच्चे के सामने आपने थाली रख दी, वो सब खा पी के आपको खाली करके दे देगा. ऐसा कभी नहीं होगा. And also there is something very, very special. When the bhoga is being offered to Radharamanji, there is live music. Always, if you go to Radharamanji, there is always live music. There is always live kirtan happening. देखा नहीं देखा, वो पीछे में वो स्थान बना हुआ है. And big musicians come, all India fame ke. They are always very desirous that when they can get an opportunity to go and sing for the pleasure of Sri Radharaman. I remember once, long year back, maybe 15, 20 years back, this was time of, where winter is approaching in Kartik. So, the bhoga was being offered and the devotee was singing that ichha ho to. The dahi, whether it may not catch, the child may not catch cold. So whether if you like, then you may accept. You getting the point? That is the level of intimate service still being maintained of Sri Radharaman there. So many things. There is the fire, original fire, on which the preparation for Radharaman Dev is being cooked. I have seen that fire inside the kitchen of Radharaman Dev, where the flame is burning for last more than 500 plus years. They don't need any match or any light from outside. The preparation for Radharaman Dev is from that fire which is burning since last 500 years. उसी पे खाना बनता है, राधारमण देव के लिए भोग बनता है, बाहर से कुछ नहीं आ सकता. और भोगा भी बहुत स्पेशल है, बहुत सारी चीजें निषेध है, नहीं लगाते. मिर्च तो कभी टच ही नहीं करते, और बहुत सारी चीजें वहां पे हैं. मेरे पास पूरी लिस्ट है कि क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है. वेरी वेरी स्पेशल डिटी. सच सर्विस इज डन विद सच भाव. दिस इज सेवा. Seva is always done with the right bhava. So Prabhupada, when Prabhupada established Krishna Balaram temple, he told his disciples that you should go to Radharaman temple
and learn the standards of deity worship from Radharaman Dev temple. So Radharaman ji appears today. Today is also the appearance of Sripad Madhavendra Puri. What the Lord says to Madhavendra Puri, same is for Gopal Bhatt Goswami. Tomara prema veshe, this is because of out of your love that I have manifest myself. And in this form, I will accept service from others and deliver them. So such is the divine personality of Srila Gopal Bhatt Goswami, Sri Madhavendra Puri, Srila Srinivas Acharya. Srinivas Acharya is the manifestation of Lord Chaitanya's potency. All the three. Lord Chaitanya's potency is manifested in the form of Srinivas Acharya. Nityanand Prabhu's potency is manifested in the form of Srila Narottam Das Thakur. And the third is, who's the third personality? Srinivas Acharya, Narottam Das Thakur. And third is? Samananda Pandit. Yes, Shyamananda Pandit. Shyamananda Pandit has the potency of Advaita Acharya. All of them appearing today. Radharaman Dev appearing today, Madhavendra Puri appearing today, Srinivas Acharya appearing today. Very, very special. Just to show that what is the bondage, what bond the Supreme Lord has with his devotee. And just appearing one day next to Narsimha Chaturdashi. So this form of deity worship that you are doing, don't take it ever ordinary. Never ever think, because many times familiarity beats contempt. The Supreme Lord is there. If you value, He will reciprocate. If you do service, seva, with this bhava, Shuddha bhava of prema, then Krishna will definitely reciprocate. As he is reciprocating in case of Prahlad Maharaj, in case of Srila Gopal Bhatt Goswami, and also with Sripad Madhavendra Puri, Srinivas Acharya. Okay, I will stop here because it is 9:30. It is 9 here and there it is 9:30. Very, very special appearance of Sri Radharaman Dev. The Lord wanted to show that your love is no less. He combined the love of, I should not speak, Rup Goswami, Sanatan Goswami, and Madhu Pandit, and manifested in the form of Radharaman. And this deity is so powerful, so enchanting. If you see the deity, you will be mesmerized. I know one devotee who's a Radharaman Bhakta. I have been seeing him for last maybe 15 to 18 years. He lives in USA. He comes for 4 months. Previously, he used to come and stay for some time in our temple also, just to have darshan of Sri Radharaman Dev. And he comes with a very powerful binocular. You can still not have the full darshan of Radharaman Dev, although he is so near deity, especially in this time of Snan Yatra and this summertime. What they do is, every day they bring Radharamanji out. There is a beautiful full bangla. I've seen it many times. And still you need a binocular to be able to see his very intricate features with which he manifests. श्री राधारमन देव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रीला माधवेंद्र पुरी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रीला श्रीनिवास आचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री कृष्ण सलिल डोल विहार की जय। श्री परमेश्वरी दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय।
Hare Krishna. Sripad Madhavendpuri, I have given class many times. I just gave class on Akshay Titiya. This 20th I gave Rohini temple. But that recording was not there. Huh? That recording, I don't know what happened. Both the last two recordings did not come. Of Gadadhar Pandit, Srila Gadadhar Pandit's class I gave in our temple on 17th. That recording did not come. And Madhavendpuri class I gave Sripad Madhavendpuri on Akshay Titiya did. That also did not come. Here also there is no recording. They don't have the system of recording. We will try and put it in place. स्क्रीन तो ले आए यहाँ पे, बड़ा टीवी का स्क्रीन ले आए, क्योंकि वर्ड्स दिखाना पड़ता है ना, वर्ड्स कैसे रिसाइट करें, और लैंग्वेज भी डिफरेंट है। तो टीवी तो ये पहले ही दिन ले आए, बोलते ही तुरंत ले आए, बड़ा टीवी ले आए 75 इंचेस का, तो उसमें वर्स दिखा देते हैं। कल आई रिपीटेड एट लीस्ट 10 वर्सेस एंड मेड ऑल ऑफ दिस डिवोटीज रिसाइट दोस वर्सेस एंड स्पेशली द प्रेयर्स। बोलो रविंदर, क्या बोलना है? बोलो, यू शुड ऑल स्पीक, यू शुड स्पीक योर हार्ट। Such opportunity Srila Prabhupada has given us. The opportunity which was there with these acharyas. From tomorrow, Krishna will start our 4th chapter. Here the dialogue between uh, Vidura and Uddhav will start. Okay, I don't see any one of you speaking. Bolo, there's nothing to speak. माननी माता जी भी नहीं आ रही क्लास में। यहाँ क्लास होता ही नहीं है, कोई बोलने वाला ही नहीं है। ओके, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।